vectors. And we have learned different types of vectors. Okay, last time we have started vectors and we have learned different types of vectors. So आप लोग बताइए, what do you mean by unit vector? Unit vector का meaning क्या है? Unit vector means Its magnitude is 1. Magnitude is 1. Null vector means magnitude is 0. And you remember, what do you remember? What do you remember is that a vector is represented by a straight line with an arrow. You remember this one? A vector is represented by a straight line with an arrow. Length of the line gives us magnitude. Arrow gives us direction. Length of the line gives us magnitude. Arrow gives us direction. Yeah, आप लोग ने पढ़ा है. And we have also learned that angle between two vectors का मतलब है angle between their direction. Angle between two vectors means angle between their direction. Suppose ये A vector है, ये B vector है, then this is the angle between them. अगर ये A vector है and this is B vector, then this is the angle between them. Angle between two vectors means angle between their directions. This thing we have learned in our last class. And also we have learned, this one is called tail, this one is called tail, and this one is called tip. This one is called tail, this one is tip. Tail of a vector, tip of a vector. Okay? Okay, now today, आज हम क्या करेंगे? First we will study vector addition. Vector addition. First we will study vector addition. ये normal addition जो है उससे थोड़ा अलग है. Normal addition में क्या होता है? 5 plus 3 equals to 8. ये normal addition में होता है. 5 plus 3 equals to 8. Vector addition में 5 plus 3 may not be 8. 8 नहीं भी हो सकता है. ठीक है? Normal addition में 5 plus 3 equals to 8 होता है. Vector addition में 5 plus 3 may not be equals to 8. 8 नहीं भी हो सकता है. So we will learn today vector addition. Okay, today we will learn vector addition. Suppose we have two vectors A and B. Suppose हमारे पास दो वेक्टर है, एक है A, ये एक वेक्टर है A, और दूसरा एक वेक्टर है B. Suppose ये एक वेक्टर है B. ठीक है? Suppose we have two vectors A and B. B. A and B are two vectors. Then this is the angle between A and B. ये angle होगा between A and B, theta. Angle between A and B. अगर हम A और B को ऐड करेंगे, then we'll get when we add two vectors, two or more vectors, more vectors, we get a resultant. हम resultant कहेंगे. So suppose हमने A को add किया B के साथ. A and B if we add, we will get resultant. R equals to A plus B.
रिजल्टेंट का मतलब समझिए आप लोग, रिजल्टेंट है सब, रिजल्टेंट का मतलब आप लोग समझिए. सपोज आई टेल 5 plus 3 equals to 8. Suppose we tell 5 plus, then it is called sum. This addition is called, now we add this one, we get 8. This 8 is the sum of these three. 8 is the sum of this 3 and 5. 8. ठीक है, हम एल्जेब्रा में इसको सम कहते हैं. इन एल्जेब्रा वी टेल इट एज सम. इन वेक्टर, वेक्टर में हम क्या कहेंगे, वेक्टर में हम कहेंगे रिजल्टेंट. ठीक है, वेक्टर में हम रिजल्टेंट कहेंगे. मीनिंग वही है जो एल्जेब्रा में हम जहां सम कहते हैं, यहाँ हम रिजल्टेंट कहेंगे. Sum of two number is 8, for example. हम यहाँ बोलेंगे resultant of two vectors. Instead of sum, we will tell resultant. इतना समझ में आया? हाँ, समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, ठीक है, ठीक है. Now, जो when we tell resultant, okay, resultant will have a magnitude and a direction. क्योंकि हमने दो वेक्टर्स को ऐड किया. जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, we'll get a resultant. Resultant will have both magnitude and direction. दोनों होगा, magnitude and direction. So हम कैसा कैलकुलेट करेंगे? हम कैसा कैलकुलेट करेंगे? How shall we calculate? तो हमारे पास दो लॉज है रिजल्टेंट निकालने का. One is triangle's law of addition. Triangle's law of addition. दो लॉ है हमारे पास. Number one, triangle's law of addition. स्टेटमेंट आप लोग लिखिए. स्टेटमेंट ये है, if two vectors are represented, if two vectors are represented by two sides of a triangle, if two vectors are represented by two sides of a triangle, then resultant is given by the third side of the triangle then the resultant is given by the third side of the triangle drawn from the tail of one vector to the tip of the other. Of the other. You write this law. ये लॉ आप लोग लिख लीजिए. मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को. I'll explain it. आप लोग ये लॉ को लिखिए. You write this law.
You write this law. And you read this one. You read this one. बार बार ये लॉ पढ़ते रहिए. आप लोग ये लॉ बार बार पढ़ते रहिए. मीनिंग समझिए. Let's try to understand meaning. Let's try to understand meaning. Suppose we have a vector. A vector. Suppose. Meaning आप लोग समझिए. ये एक वेक्टर है A. और ये एक वेक्टर है B. This is another vector B. This is another vector B. Two vectors are there, A and B. Angle ये थीटा हो गया. Now the statement आप लोग पढ़िएगा. Statement में क्या दिया हुआ है? If two vectors are represented by two sides of a triangle, एक triangle का दो sides होने से resultant is given by the third side of the triangle drawn from the tail of one vector to the tip of the other. देखिए, if two vectors, इसका मतलब देखिए, दो वेक्टर्स है, एक ट्रायंगल का दो साइड हो गया, ठीक है. Then the resultant will be given by the third side. हम third side draw करेंगे. This one will give us the resultant, third side. ये ग्रीन वाला रिजल्टेंट देखा है. ब्लू जो दो है A and B, they are the vectors. A and B are two vectors. Resultant is given by the third side. Third side हम draw कैसा करेंगे? देखिए, drawn from the tail of one vector. ये देखिए, drawn from the tail of one vector to the tip of the other. Drawn from the tail of one vector to the tip of the other. इसका मतलब पहले वेक्टर का ये टेल है और दूसरा वेक्टर का ये टिप है. सो डायरेक्शन ये होगा रिजल्टेंट का. समझ में आया सबको? हाँ जी, बताइए एक बार, आया कि नहीं सबको से ये समझ में? अच्छा, ठीक है. ओके, एक बार फिर से देखिए. फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ आप लोगों को. एक बार फिर से देख लीजिए. एक बार फिर से देख लीजिए. ट्राइंगल्स लॉ ऑफ एडिशन क्या बोल रहा है? इफ टू वेक्टर्स, देखिए, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, two sides of a triangle, then the resultant क्या हुआ? Is given by the third side of the triangle, and third side of the triangle drawn from the tail of one vector to the tip of the other. Drawn from the tail of one vector to the tip of the other. ठीक है. अभी यहाँ देखिए, this is vector A, ये vector A है, ये वेक्टर B है, ठीक है. ये A है, ये B है. ये ट्रायंगल का दो साइड, ये ट्रायंगल का दो साइड हो गया.
तो ये थर्ड साइड होगा। थर्ड साइड हम कैसा ड्रॉ करेंगे? फ्रॉम द टेल ऑफ वन, इसका टेल और उसका टिप, टेल ऑफ वन टू द टिप ऑफ द अदर। हाँ, ये एक लॉ है। ये लॉ हम यूज करेंगे टू फाइंड, दिस इज वन लॉ, वी कैन यूज दिस टू फाइंड द रिजल्टेंट। अच्छा, हमेशा ये लॉ हम यूज नहीं भी कर पाएंगे। Maybe we may not be able to use this law always. So we have another law, और एक law है parallelogram law of addition. Parallelogram law of addition. एक और law हमारे पास है parallelogram law of addition. हाँ, ये law आप लोग लिखिएगा पहले. First you copy down this law. If two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is given by the diagonal of the parallelogram drawn from the tail of both the vectors. Drawn from the tail of both the vectors. Okay, if two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is given by the diagonal of the parallelogram drawn from the tail of both the vectors. Okay, this parallelogram law of addition. आप एक बार पढ़िए ये parallelogram law of addition. You read once. ये जो parallelogram law of addition है, you read once. एक बार नहीं, 3-4 बार आप लोग पढ़िए ये parallelogram. आप सबको पता है, all of you know what is parallelogram. If two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant is given by the diagonal of the parallelogram drawn from the tail of both the vectors. ठीक है? Now what does it mean? एक बार हम समझ लेते हैं ये. Let's try to understand once. Let's try to understand once.
Suppose this is vector A. Vector A. Suppose this is vector A. I'll change the color. मैं दूसरा color use करूँगा. I'll use different colors. Suppose this is vector A. Okay. Vector A. And नहीं वो तो हम just one. Okay, suppose this is vector A and this is vector B. Okay, vector A and vector B. So this is the angle between them. This one is the angle between them. Now, the parallelogram law, देखिए आप लोग law पढ़िए law को. You read the law. If two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram. Adjacent side. ये देखिए यहाँ दोनों को adjacent side of a parallelogram. Then the resultant is given by the diagonal of the parallelogram drawn from the tail of both the vectors. So हम क्या करेंगे अभी? What we will do, we'll complete the parallelogram. हम ये parallelogram को complete कर देंगे. We'll complete the parallelogram. We'll complete the parallelogram. हमने ये parallelogram complete किया. Who will complete the parallelogram? पहले हम parallelogram को complete करेंगे, and the diagonal will give us the resultant. Okay, diagonal कौन सा diagonal drawn from the tail of both the vector. ये देखिए दोनों vector का tail है, यहाँ से हम diagonal को draw करेंगे. Okay, the tail of both the vectors drawn from the tail of both the vectors. ये diagonal हो जाएगा. So this diagonal will give us the resultant. Okay, you understood? इसका जो length होगा, इसका देखिए जो length होगा, इस line का length will give us magnitude, और ये जो arrow है, arrow will give us direction. ये triangle law देखिएगा, समझ में आया कि नहीं? ये triangle law आप देखिए, समझ में आया कि नहीं? इसका देखिए, इस ट्राइंगल में क्या है कि two adjacent sides of a triangle हो गया, और ये resultant है drawn from the tail of one vector to the tip of the other. इसका length हमें magnitude देगा, and this arrow will give us direction. Okay, yeah, this is one vector, this is another vector. We'll complete the parallelogram. हम पहले parallelogram को complete करेंगे, और उसके बाद क्या होगा? This diagonal will give us the resultant. Okay. किसी को कोई प्रॉब्लम है? Any one of you? तो इसका मतलब क्या है? हम जब भी A और B को ऐड करेंगे तो हमें एक रिजल्टेंट आएगा. Whenever we'll add A and B, we'll get a resultant. और रिजल्टेंट निकालने के लिए
Either we can use this one, हमें ये parallelogram law use कर सकते हैं हम, या तो हम क्या करेंगे, ये triangles law ये वाला हम use करेंगे. Either we use triangles law of addition or parallelogram law, and both of them will give us the same thing. ठीक है, both of them will give us the same thing. To know हमें same thing, they will give us same thing. Now, how to find? You see, यहाँ तो R जो है वो दोनों देगा हमें, मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट दोनों, सॉरी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों देगा. यहाँ जो R है वो हमें दोनों देगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों एक साथ नहीं निकल पाएंगे, अलग अलग निकलेंगे. हाँ, so first let's try to find. First let's try to find magnitude, to find magnitude of resultant R, magnitude of R. Now first let's try to find magnitude of R. Suppose मैं ये लिखता हूँ, suppose this point is O, A, B, C. OA, B, C. OA length will give us magnitude of A, OB length will give us magnitude of B, and OC इस लाइन का length हमें magnitude of resultant देगा. तो हमें इस लाइन का length निकालना है. We want to find the length of this one. So what we will do, हम ये क्या करेंगे, ये OA को थोड़ा extend कर देते हैं इस साइड पे. OA को extend किया और C से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर देते हैं. OA को एक्सटेंड किया, देखिए OA को एक्सटेंड किया और C से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर दिया. ठीक है, OA को तो एक्सटेंड किया, सपोज D, ये पॉइंट D है, सपोज ये D है, ये पॉइंट D. OA को तो एक्सटेंड किया D तक और C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. Okay, now you see this line AC and OA, they are parallel. अब देखिए AC and OA, they are parallel. So how much will be this angle? ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल देखिए दोनों इक्वल होगा क्योंकि OB and AC are parallel. So both of them will be equal. So this angle is theta. Okay. Now in triangle, you see, in triangle ACD, triangle ACD इसमें हम क्या लिखते हैं? AD by AC is cos theta. अब चेक कीजिए. In triangle ADC, AD base हो गया, AC hypotenuse. AD by AC is cos theta. AC और OB हम सेम लिख सकते हैं. AC is equals to OB, opposite sides of a parallelogram. Okay, AD equals to OB. Sorry, AC equals to OB, ये side और ये side equal होगा, opposite sides of a parallelogram. AD by OB is B. OB ये जो है, ये लाइन जो है, इसका लेंथ B होगा, cos theta. AD equals to B cos theta. इतना तक समझ में आया कि नहीं? देखिए, all of you check whether you have understood this much or not.
कोई प्रॉब्लम है इतना तक? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम्स यार? सर एडी बाई ओबी सर। नहीं नहीं, एडी बाई ओसी है, एसी। और ये देखिए एसी, एसी मतलब ये साइड, एसी ये साइड, एंड ओबी ये साइड, ओबी, दे आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, दे आर इक्वल। व्हाई दे आर इक्वल? ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये हमने यहाँ पुट किया, एसी के जगह सिर्फ ओबी लिख दिया। They are equal. Why they are equal? Because they are opposite sides of a parallelogram. And OB, OB मतलब इस लाइन का लेंथ है, ये जो लाइन है इसका लेंथ है OB, इस लाइन का लेंथ is B, line of that length is B. अच्छा एक बार फिर से देखिए, again, अब देखिए DC by AC is sin theta. ठीक है, DC by AC is sin theta. AC को हम OB लिख सकते हैं, AC को OB लिख सकते हैं। OB is sin theta. AC और DC इक्वल होगा क्योंकि दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, दे आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके, तो आप यहां से देखिए DC आएगा, कितना आएगा? DC इक्वल्स टू DC OB is B is sin theta. So DC is B sin theta. Equation number 2 आया कि नहीं? हाँ चेक कीजिए, AD is B cos theta, चेक कीजिए, चेक कर लीजिए, आप लोग सब कर लीजिए। AD is B cos theta and DC is B sin theta. नेक्स्ट आप लोग देखिए, नेक्स्ट ट्राइंगल ODC आप लोग देखिए, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ODC, ये वाला ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल O, ये ट्राइंगल देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। नेक्स्ट ये ट्राइंगल देखिए OCD, नेक्स्ट ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल OCD, in triangle OCD, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग यूज कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, OC square equals to OD square plus DC square, पाइथागोरस थ्योरम देखिए। OC का लेंथ है R, ठीक है, OC जो है, OC ये लाइन, इस लाइन का लेंथ है R, मैग्नीट्यूड, लेंथ गिव्स अस मैग्नीट्यूड, लेंथ इज R। OD देखिए, OD को हम लिख सकते हैं OA plus AD। OD, you see, OD is from here to here, OD is from here to here, OD को हम लिख सकते हैं OA plus AD, OD को हम लिख सकते हैं OA plus AD whole square,
एंड डीसी को हम बी साइन थीटा लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 को यूज किया, यूजिंग इक्वेशन 2। उसके बाद आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए, अगर आप देखिएगा इस फिगर में, ओ ए मतलब इतना है ए, ओ ए इस लाइन का लेंथ है ए, ओ ए इज ए, एंड ए टी हमने इक्वेशन 1 पे कैलकुलेट कर लिया, ए टी इक्वेशन 1 पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। देन ओ ए इज ए टी इक्वेशन 1 में कैलकुलेट किया बी कॉस थीटा स्क्वायर प्लस इस टर्म का क्या है, इस टर्म का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें आप लोग ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कीजिए, इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कीजिए, इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कीजिए। क्या आएगा आप लोग के पास, लेफ्ट हैंड साइड में तो आर स्क्वायर है, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी इज बी कॉस थीटा, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस प्लस क्या था, प्लस ये था बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये था बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस दोनों टर्म से अगर हम बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड हाउ मच इज दिस वन, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना है, 1. 1। सो इसको हम ऐसे लिख सकते ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर। सो हम ऐसा लिखेंगे, रूट ले लेंगे, हाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आर स्क्वायर है, सो रूट लेने से स्क्वायर चलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। This one is very important. The resultant, आप दो वेक्टर का ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट ये आएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अभी देखिए 5 + 3 = 8 नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ और हो रहा है, ठीक है। 5 + 3 is not 8 here, it is something else. आप लोग एक बार देखिए, ये एडिशन जो हमने रिजल्टेंट कैलकुलेट किया टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये एक बार चेक कीजिए समझ में आया कि नहीं, पूरा वाला चेक कीजिए।
टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर कोई प्रॉब्लम है? देखिए आप लोग, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर, उसमें कोई प्रॉब्लम है? कैलकुलेशन से एक बार चेक कर लीजिए। और ये जो हमने फॉर्मूला यहाँ कैलकुलेट किया, दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा। Whenever you add two vectors, you'll have to remember this one. It is so important, very, very important. Okay, it is very, very important. आपको याद रखना ही पड़ेगा। So magnitude, देखिए जब हम रिजल्टेंट लिखेंगे, हाँ, यहाँ ये आर में देखिए उसका दोनों है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। हमने क्या किया, यहाँ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया। ठीक है, हमने यहाँ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया। नाउ पीपल में आस्क अस टू फाइंड डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन क्या होगा ना? लेंथ ऑफ द लाइन देखिए, ये जो लेंथ ऑफ दिस लाइन इज मैग्नीट्यूड। हमने वो लेंथ कैलकुलेट किया, ओसी इज लेंथ ऑफ लाइन। यहाँ देखिए ये जो ओसी है, ओसी इज द लेंथ ऑफ द लाइन, और ओसी को हमने आर लिखा, मैग्नीट्यूड, आर मैग्नीट्यूड आ गया। नाउ इफ पीपल वांट टू फाइंड द डायरेक्शन, इफ वी वांट टू फाइंड डायरेक्शन, अगर हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, then we will have to find this angle. हमें ये एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए। If we want to find direction, then we'll have to calculate this angle. ये एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोज ये एंगल अल्फा है, अगर हमें अल्फा पता चल गया तो we'll tell that this is the direction. If we know alpha, then we can tell the direction. Okay, so we want to find the direction. To find direction of resultant, मैग्नीट्यूड तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। मैग्नीट्यूड यहाँ ये मैग्नीट्यूड है, ये देखिए ये मैग्नीट्यूड है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। टू फाइंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए हमें ये अल्फा कैलकुलेट करना है। ये अल्फा, ये ट्रायंगल पे देखिए आप, ट्रायंगल ओ सी डी, पहले भी हमने ये ट्रायंगल कंसीडर किया था ओ सी डी, फिर भी एक बार कंसीडर कर लेते हैं ट्रायंगल ओ सी डी। In triangle OCD, in triangle OCD, OCD पे देखिए ट्रायंगल OCD, कहाँ गया OCD? इसमें देखिए OCD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। टेन अल्फा हम क्या लिख सकते हैं? टेन अल्फा क्या लिख सकते हैं? DC बाय OD लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए चेक कीजिए, टेन अल्फा DC बाय OD लिख सकते हैं कि नहीं? ये देखिए फिगर देखिए, टेन अल्फा इज DC बाय OD लिख सकते हैं कि नहीं? DC का वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर लिया। DC का वैल्यू देखिए इक्वेशन 2 में है, DC का वैल्यू B sin थीटा। DC का वैल्यू है B sin थीटा। ठीक है, DC का वैल्यू है B sin थीटा बाय OD का वैल्यू देखिए, OD क्या होगा? ये फिगर में देखिए, फिगर लुक एट OD इज OA प्लस AD। OD देखिए OA प्लस AD, सो OD को हम लिख सकते हैं OA प्लस AD।
b sin theta by OA. अब फिगर में देखिए, you look, OA is the length of this line. OA is the length of this line, which is A. OA is the length of this line, which is A, and AT हमें यहाँ से equation 1 से आ जाएगा. AT is B cos theta, equation 1 from equation 1. A plus B cos theta. So tan alpha equals to B sin theta by A plus B cos theta. ये formula हम याद रखेंगे. We'll remember this formula. We'll remember this formula. We'll remember this formula. ये formula हम याद रखेंगे. Okay. So this is a very important formula. It's a very, very important formula. हम ये formula याद रखेंगे. We'll remember this one. ये अल्फा हमें डायरेक्शन देगा. अगर हम अल्फा कैलकुलेट किया तो हम डायरेक्शन बता सकते हैं कि ये डायरेक्शन है. Okay, any questions you want to ask? आप लोग को कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. If you want to ask any question, you can ask. Okay, so अब देखिए, you remember this resultant, all of you remember this resultant, and you remember this one. अगर आप कोई भी law use कीजिए, whether you use triangles law or parallelogram law, you will always get the same thing. Okay, whether you use triangles law or parallelogram law, you will always get the same thing. Whether you use triangles law or parallelogram law, you'll always get the same thing. Okay. Okay. Now one problem I'm sharing. एक problem मैं आप उसका share कर रहा हूँ. You first copy this problem. अब पहले उस problem को copy कर लीजिए, बाद में उसको solve कीजिएगा. ठीक है, मैं share कर रहा हूँ आपके साथ. One problem I'll share with you. मैं share कर रहा हूँ आप लोग के साथ. ये प्रॉब्लम आप कीजिएगा. एक मिनट है. ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला प्रॉब्लम. पहले प्रॉब्लम को कॉपी कर लीजिए.
पहले आप ये प्रॉब्लम को कॉपी कर लीजिए। Two vectors, each of magnitude A. Two vectors, each of magnitude A, have resultant of same magnitude A. The angle between the two vectors is easy problem. पहले आप क्वेश्चन को कॉपी कीजिए। और जो भी आंसर आया आप लोग वो फटाफट लिखिए। हाँ, हाँ देखिए, टू वेक्टर्स, या देखिए ईच ऑफ दोनों का मैग्नीट्यूड ए है, रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड ए है, बी का मैग्नीट्यूड भी ए है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी ए है। दीज आर गिवन। ए का मैग्नीट्यूड तो ए है, बी का मैग्नीट्यूड भी ए है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी ए है। सो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखिए आप लोग। रिजल्टेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला? रूट ऑफ आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा हमें निकालना है, वी वांट टू फाइंड थीटा। अब एक काम कीजिए, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दीजिए तो रूट चला जाएगा। दोनों साइड को स्क्वायर करने से रूट चला जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में होगा आर स्क्वायर, स्क्वायर और रूट चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आर ए है, यहाँ देखिए आर इज ए,
A तो A है, B is also a cos theta. A is a, B is also a, plus 2a square cos theta. So 2a square cos theta will be minus a square आ जाएगा, ठीक है। यहां से आ जाएगा cos theta is minus 1/2. Cos theta is minus half. तो थीटा कितना होगा? If cos theta is minus half, how much will be theta? Cos theta अगर माइनस हाफ होता है तो थीटा कितना होगा? 120. Cos 120 is minus half. ठीक है, cos 120 is minus half. सबका समझ में आया? आया कि नहीं? आप एक काम कीजिए, अभी नेक्स्ट ईयर ट्राई कीजिए, नेक्स्ट ईयर ट्राई कीजिए आप। This question you try this question. आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। The resultant of two vectors at an angle 150 degree is 10 unit and is perpendicular to one vector. The magnitude of the small r vector is
You got the resultant of two vectors. दो vector है उनका which angle 150 and is perpendicular to one vector. Suppose ये the magnitude of smaller. Suppose ये smaller vector है. हाँ, ये जो vector है smaller vector है A. तो B ऐसा होगा B. ये B हो जाएगा B. ये होगा रिजल्टेंट. रिजल्टेंट का कलर में चेंज कर देता हूँ. ये रिजल्टेंट हो गया रिजल्टेंट. ये रिजल्टेंट. रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए. मतलब अल्फा दिया हुआ है. अल्फा दिया हुआ है. अल्फा इज ए. अल्फा दिया हुआ है. सॉरी, अल्फा इज 90. अल्फा दिया हुआ है 90 परपेंडिकुलर. या देखिए परपेंडिकुलर टू वन वेक्टर. परपेंडिकुलर टू वन. अल्फा 90 दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है 150. एंगल इज 150. We want to find magnitude of the smaller vector. So resultant भी दिया हुआ है 10. resultant. So पहले हम ये लिख लेते हैं 10 अल्फा. फॉर्मूला क्या है? b sin theta by a plus b cos theta. ठीक है. 10 अल्फा is b sin theta by a plus b cos theta. 10 90. अल्फा is 90. b sin theta by a plus b cos 150. So 1090 infinity हो गया. Infinity b sin theta divided by a minus हो जाएगा. Cos 150 is minus √3/2. Cos 150 is minus √3/2. Minus √3b/2. हमें a निकालना है. We want to find a actually. हमने ये a smaller वेक्टर ले ली. अभी देखिए, you see here, you see, अब यहाँ देखिए 1090 is infinity. 1090 is infinity. When do we get infinity? हमें कब infinity मिलता है? When do we get infinity? If we divide by 0. मतलब ये जो denominator है ये 0 होना पड़ेगा. We get infinity if we divide by 0. So a minus √3b/2 equals to 0. From here b you will get 2a by √3. b you will get as 2a by √3. ठीक है. b you will get as 2a by √3. Now you write the formula for resultant. Resultant का formula लिखिए आप लोग.
सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखिए. रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? r इक्वल्स टू रूट ऑफ r a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. थीटा 150 है और b का वैल्यू 1 से पुट कर दीजिए. r इट्स 10 स्क्वायर करने से 100 हो जाएगा. हाँ, ये दिया हुआ है r इट्स 10 स्क्वायर करने से 100 हो जाएगा. a स्क्वायर तो a स्क्वायर रहेगा. b स्क्वायर कितना होगा? 4a स्क्वायर बाई 3 प्लस 2a. b होगा 2a बाई रूट 3 एंड cos 150 होगा माइनस रूट 3 बाई 2. सो ये माइनस हो जाएगा. दिस विल बिकम माइनस. ये माइनस हो जाएगा. cos 150 is root 3 by 2. So root 3 cancel. Root 3 cancel. 2 और ये 2 cancel. कितना आएगा आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो? हंड्रेड इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाई 3 माइनस कितना आ रहा है? 2a स्क्वायर. आप कैलकुलेट कीजिए. आंसर सेकंड ऑप्शन आना चाहिए आपको. यू कैलकुलेट एंड यू शुड गेट द सेकंड ऑप्शन. ठीक है, आप कैलकुलेट कीजिए. आपको a स्क्वायर आएगा 300, a आएगा रूट 300 मतलब 10 रूट 3. Okay, so we'll stop here today.